best thing about Pakistan is its people, and the worst thing about Pakistan is its people. Like, and that is what I stand by that. So I said the best thing is our hospitality and everything, but worst thing is. Hello and welcome to another episode of Daftarkhwan Fireside. I'm Areesh. I'm a photographer, videographer, just a guy with a camera shooting your content. And I'm your host for today. So our guest for today is Bilal Hassan, also known as Mystapaki. And we're just going to pick him up from his hotel. He is Lahore for a day and we're going to make the most out of it. For those of you who don't know Bilal, Bilal is a medical professional with a specialization in emergency medicine. But he is more popularly known through his storytelling on his Instagram page. For that, he has been traveling across Pakistan and been to different countries, gathering stories and sharing food, love from across the globe. Through his storytelling, he has been featured in major publications like the Toronto Star, Vice, Gulf News, AJ Plus, BBC Urdu, you name it. Bilal, क्या हाल चाल? Good scene. आप बताएं? बेहतरीन मजे में. क्या करें लाहौर में? लाहौर में बेसिकली समझे मैं ट्रांजिट में हूँ. मैं अभी आ रहा था, काजाख्स्तान से आ रहा था एंड काजाख्स्तान फ्लाइट सिर्फ लाहौर से जाती है, सो दैट्स व्हाई आई केम टू लाहौर एंड मेरे पास अभी कुछ 5 घंटे किल करने के लिए. तो या एंड हियर वी आर. उसमें आप हमारे साथ ये एपिसोड किल करें. बिल्कुल. थैंक यू यार कि आपने टाइम निकाला. थैंक यू एंड फॉर अरेंजिंग इट. इट्स नॉट इजी कि कराची के बंदे के साथ लाहौर में करें, बिकॉज़ व्हेनेवर वी ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे होते तो लाइक इट्स वेरी. और नहीं, हम एंड व्हेनेवर वी कम टू ईच अदर सिटीज हम फुल बस एजेंडा के साथ आते हैं ना, ठा ये होता है. तो इत्तेफाक से बस मेरे पास 5 घंटे में कुछ नहीं करने को, चिल सीन है. सो ये ना हमने उसमें भी आपको खाली रहना है, एजेंडा बना दिया. नहीं बेहतरीन आई एम ग्लैड. ओके, सो आई एम श्योर बहुत दफा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका होगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क वन मोर टाइम. व्हाट इज Mystapaki? Why is Mystapaki and who is Mystapaki? Oh God, acha, this is a loaded question. So basically, Mystapaki is a combination of 2 words. Very simple. It's Mr. and Paki, Pakistani. It's like Mr. Pakistani, but Mr. Pakistani is too long. And मगर funny thing is, कई लोग जो मुझे बुलाते हैं Mr. Paki. I think बहुत कम लोग मुझे बिलाल से जानते हैं, because इतना कॉमन नाम है. लोग मेरे वेरिएशंस हैं नाम के, तो मिस्टर पाकी, मिस्टर पाकिस्तानी, मिस्टर पीके, बहुत सारे हुए. तो खैर इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वर्ड्स. एंड व्हाई आई चोज इट, बड़ा इंटेंशनल था कि मैंने क्यों यूज किया था specifically the word Paki, because it has a very negative connotation attached to someone who looks like us. हमारे यहाँ basically 50-60s में बहुत सारे migrants गए थे पाकिस्तानी to the UK, and this word was used to dehumanize us, दिखाने के लिए कि हम घटिया हैं, हम नीच हैं, हम we're stupid, intelligence low है हमारा intellect भी बहुत कम है. तो it's sort of my way of like reclaiming this negative word. मैंने कहा अगर ये लफ्ज़ मेरे ऊपर इस्तेमाल हो सकता है तो मेरे ऊपर हक भी है इसको reclaim करने को, to give it a new meaning. And through my page मैं बड़ी intentionally दिखाता हूँ कि this Pakistani can be smart, can be intellectual, can be funny, travels and you know all the things जो हमें गोरे ने बोला था कि मैं नहीं हो सकता, हम जैसे लोग नहीं हो सकते, वो सब कुछ stereotype one by one through one post just kill करना. So that's basically it. And currently like start तो इस वजह से हो गया. हाँ. Today who is Mystapaki? Today who is Mystapaki? Mystapaki is constantly evolving यार. साफ सी बात है. It's like you know me from like the earliest days, like before Mystapaki was Mystapaki. Exactly, that is why I asked you know me that. So it just started off with I used to do documentary photography. मैं कैमरा के सामने नहीं आता था ज़्यादा, because I was very shy and awkward in front of the camera. It was more about just कि मैं daily life पाकिस्तान के अंदर दिखाता था, which I still do. Like it's still there in the page in the form of reels ज़्यादा आ गई हैं. Although I still enjoy taking photographs much more, because I don't know, मेरा medium वो है ज़्यादा कि where I get into these really intimate moments of Pakistani life, और वहाँ एक उसको मैं document करता था तस्वीरों के ज़रिए. But now it's just evolved in the sense where I have also become the story. I have also become a part of the brand, because I also come in front of the camera. So it's become a lot of things. Like it's become documentary photography. I am dispelling Pakistani stereotypes one post at a time. It's also food. I also like cover food over here because food is also a very important part of Pakistani culture. Saath mein recently I've also gone into fashion a bit. I've also gone into fitness. So it's kind of now become like an all-rounded lifestyle personality, I guess. That's what I'd say.
now we're just going to stop for a quick pit stop Uh-huh. at Daftarkhwan downtown. Zabardast. And यहाँ की yellow bar से they're going to serve us with some chillers or कुछ ठंडा वंडा. Oh no, I could use something right now. So yeah, this is Daftarkhwan downtown. I think the newest site in Lahore right now. That's really nice. ठंड पड़ गई लाहौर की गर्मी में. लाहौर की कराची गर्मी. का मौसम is so good these days. बहुत अच्छा मौसम है यार आजकल. लाहौर में तो like सांस आना जो है. अच्छा और अभी जो होटल था उधर बिजली आ रही जा रही होता. That's Lahore, bro. So Dr. Saab, हाँ जी बोले. what inspired you to start all of this, like content, storytelling, traveling? Like, यार what inspired me was एक तो I just started the page out of frustration, साफ सी बात है. And I was just annoyed at the way Pakistan was perceived. Yes, I do understand that there is truth to it, but at the end of the day we're also a very big country. जब मैंने शुरू किया था, when I started off ना, मुझे ये नहीं था कि मुझे हज़ारों लोग देखें and everything, this fame and anything, none of that stuff. मैंने कहा 2 लोग भी मेरे थॉट्स पढ़ लें कोई बात नहीं, ठीक है. इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक वेंटिंग आउट, वाज जस्ट वेंटिंग आउट था, एक वेंटिंग एरिया था वो मेरे लिए. तो या लाइक आई मीन मलाला हैड गॉन शॉट द हेड, द पेशावर अटैक्स हैड हैपेंड, हमारी क्रिकेट टीम भी फुल बदनाम हो रही थी बैटिंग स्कैंडल्स में, जहाँ सलमान बट और ये सारे मोहम्मद आमिर सब आए थे. एंड आई थिंक जो न्यूज़ थी ना, जो like just became obsessed with ये पागल जंगली मुल्क, and those are the exact words I will use. But मैंने कहा नहीं, हम actually we're a very big country. 250 million people live in Pakistan. It's the 5th most populous country in the world, and I was like, there is much more to this country than just this. तो इसी तरह से मैंने बस I just used social media के through one post open up a window into people's life over here, because मैंने कहा मैं तो लोकल हूँ, मैं यहीं रहता हूँ and everything. I understand the mindset, the psyche and everything, and through that I can show people. Okay, so I know this personally कि हमने जब Instagram start किया था, Insta Meets होती थी, छोटी सी community थी. 10,000 was a big milestone for us. Yes. Now you are 100K. What's the difference? How does it feel like? 10K used to feel like a milestone उस वक्त, ठीक है. मगर बताऊँ 10K की जो डिफरेंस था उस वक्त, जो लोग हैं ना वही आपके दोस्त हैं. Once it goes beyond and the higher your numbers go, remember it also gets very lonely. And like I can say this with full honesty कि आपका दोस्त बहुत कम होते हैं, interests होते हैं. Where people will want to talk to you, want to collaborate with you and everything, and they'll be very nice to you, आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, but साफ सी बात है आप इंटरेस्ट है उनके लिए, आप उनके दोस्त नहीं हैं. एंड ये एक चीज़ होती है जो बड़ा एक मुश्किल सा हार्ड पिल टू स्वॉलो विच यू, बट आपको ये एक्सेप्ट करना होता है. सो लाइक आई फील लाइक 10K फेल्ट लाइक अ बिगर माइलस्टोन, बिकॉज वहाँ आपके देयर वर पीपल, वी वर अ कम्युनिटी, very small community but very niche community, where we were actually friends. At 100K when you're getting at that level, you आपके लिए खुश सिर्फ वो 10K से वाले लोग हैं, बाकी everyone else is just seeing you as competition or sign kind of that thing. So like yeah, like it that's how it feels. It feels the same ish. But I've seen this personally, and I've seen people ask me कि यार बिलाल से मिलवा दे. Can I get a picture taken with him? How does that feel? Because again, lonely हो गए, दोस्त पुराने. Yes. All good. Yes. I agree. But this like stardom, celebrity feels. I mean, it feels nice. It feels very sweet कि अगर आपको कोई recognizes you, and it's like कई दफ़ा आपको hit करता है कि, किस बताऊँ कभी बार it doesn't मुझे comprehend नहीं करता कि how far my work goes. And I think it recently has started like comprehending कि oh my god, wow, okay. Like I'll tell you a few instances. जैसे a little bit about myself. Like I come from a very clean cut doctor family, ठीक है. Like nobody has gone into the media and ये वाली चीज़ें कभी किसी ने नहीं करी हैं. तो my parents have had a very hard time digesting this. Like ये इनके लिए digest करना बड़ा मुश्किल था, and I'll be very frank about this, they have not been happy about this. They've given me a very hard time. Not just my parents, because parents को ऊपर से लोग जो बोलते हैं आपके खानदान वाले, अरे ये आपके बेटा क्या काम कर रहा है, आपका बेटा ये excuse my French, ये क्या वाले काम कर रहा है. Like they say these things to my parents, ठीक है. And to my parents, like ये कि इनका डॉक्टर बेटा ये काम कर रहा है. So for them it's very hard. तो एक दिन था where like we went out for dinner, very nice place, very very nice place for dinner, and like हमने बहुत खाना मंगाया था, and I think हमारा like
I don't know how much our bill should have come to like 12-13,000 का bill था because I was taking my parents out and everything. So जब bill देने का time आया था तो उसने जब हमें वो दिया था the bill, तो उसके अंदर someone had written a note. They're like, keep up the great work, Mr. Paki. The food is on us. So someone across the table, he just waved to me. He's like, इस तरह, and I don't even know कौन बंदा था. मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता. But he paid for my bill. And उस वक्त for me it was बड़ा एक moment था where I think मेरे parents भी even realized, okay, he's probably doing something. शायद ये कुछ कर रहा है. There's something happening where like if someone's paying his bill for like 12-13,000 rupees and he's probably doing something respectable. एंड सच बात है, मुझे मेडिसिन में कभी किसी ने समोसा तक नहीं खिलाया, चाय तक नहीं खिलाई, आज तक किसी ने मुझे इतनी लिफ्ट नहीं दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है यहाँ। अभी जैसे मैं काज़ाकिस्तान गया था, तो काज़ाकिस्तान इज एक सेंट्रल एशिया में, आप कहाँ सोचते हो कोई पाकिस्तानी मिलता, वहाँ एयरपोर्ट पे एक कोई बच्चा था, वहाँ पढ़ता था, ठीक है, वो दूर से, और वो भी लाइक मुल्तान से आया था काज़ाकिस्तान पढ़ने। वो मुझे लाइक वहाँ मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, आया एकदम से, आप बिलाल हसन हैं। दिस इज वेरी वियर्ड बिकॉज लोग मुझे बिलाल मेरा नाम नहीं जानते, लोग बस मिस्टर पाकी से जानते हैं। मैंने कहा जी सर मैं आपका बहुत लॉन्ग टाइम फॉलोअर हूँ, मैं आपके साथ तस्वीर ले सकता हूँ एंड एवरीथिंग। सो दीज आर लाइक स्वीट मोमेंट्स वेयर यू लाइक वाओ, लाइक कहाँ तक आ गए एंड एवरीथिंग। इस साल अर्लियर आई वेंट टू लॉस एंजलिस एक टॉक देने, वहाँ लोग मिल गए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल। ओके, सो बिलाल, यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ योर पेरेंट्स everyone's from medical family background, ये वो सारा कुछ, but now how do you manage your like full-time medical profession, your storytelling, like how? सच बात बताऊं अरीश, I don't manage it, like it's and it is very chaotic, मैं सच बात बताऊं, because कोई दिन होते हैं where because the medical field is very demanding, बहुत डिमांडिंग होती है इन द सेंस कि जो मेरा दिन होता है वो शुरू होता है सुबह को 6:30-7 बजे शुरू होता है, एंड इट्स अ फुल फ्लेज थिंग टिल 5ish PM, घर आते आते 6 बज जाते हैं, एंड इसके अंदर कंटेंट, सो कंटेंट इज प्रॉबली इट इज़ पैशन, साफ सी बात है, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स मी, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज सो मच अबाउट पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी, दैट वी डोंट टॉक अबाउट, दैट वी डोंट डिस्कस, तो वो मुझे बस एकदम से आई जस्ट नीड टू डू कंटेंट, मुझे करना लाजमी है, ज़रूरी है। Medicine now at that point I'm at that point where it's kind of become secondary, like content is becoming more primary right now, where that is probably driving me more, और मेरा ज़्यादा passion वहाँ है, and if I'm being very very frank over here, medicine just doesn't pay the bills, it doesn't, ठीक है, and I am very much at that point where I am compelled to also make a choice कि how much more longer can I do this. साथ में I'm also pursuing an education, like I'm doing a master's right now from Khan University. So yeah, so it's tough, yeah, it's tough. I've seen over the years content भी grow है, आप भी grow हैं, सब कुछ evolve हो रहा है. So like, and you've been traveling a lot, yes, especially after COVID. आपकी traveling बढ़ी है. Yes. So how does that help you in your storytelling and your overall content? यार Areesh, it has broadened my horizon बहुत. आप कई चीज़ें जो जिस नज़रिए से आप नहीं देखते, वो आप जब जाते हो, when you travel and you meet नए लोग, नए कल्चर्स आपसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपका होराइजन बड़ा ब्रॉडन होता है। तो जैसे एक मेरी वीडियो which is one of my most viral videos, I think it has almost like 2 million almost views हैं उसके, is like where did all the women go, and that video came into being because मैं जब बाहर गया था और मैं वापस पाकिस्तान आता था, ये चीज़ बहुत होती थी कि मैं जब 14 अगस्त की तस्वीरें लगाता था तो मुझे बड़े कमेंट आते थे औरतों के, पाकिस्तानी वुमेन हमेशा कहती थी कि हाँ दिस इज कूल बट कोई औरतें नहीं हैं इन तस्वीरों में, औरतें कहाँ हैं, ओह आई विश आई कुड सेलिब्रेट ऑल्सो। अच्छा सच बात बताओ ऑनेस्टली, आई यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड बाय इट। मैं कहा यार क्या यार, इतनी मैंने प्यारी तस्वीरें ली है, इतनी अच्छी तस्वीरें ली हैं, क्यों आके कर रहे हो, एंड यू नो सच बात है। एंड बट जब मैं बाहर गया, बाहर कोई एज मैं कोई यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं यहीं अपने नेबरहुड में, अब नेपाल, श्रीलंका, मालदीव टाइप, हमारे जो बिल्कुल हमारी तरह ही लोग दिखते हैं, एंड वहाँ में जाते ही आप लैंड करते हो, आप देखते हैं कि ख़वातीन आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ एवरीवेयर, लाइक वो चाय भी बना रही होगी, वो सब्जी भी बेच रही होगी, वो ऑफिस में भी होगी, हर चीज लाइक दे आर देयर, और वो इजी है, वेरी इजी, एंड इट्स नॉट लाइक, अच्छा वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइक उनके मर्द भी उनको घूर रहे हैं 24 घंटे एंड एवरीथिंग, औरतें हैव द फ्रीडम to achieve their dreams over there. Exactly. And यहाँ जैसे कराची एयरपोर्ट में लैंड किया, मैं देखता था इमिग्रेशन की लाइन पर, मैंने कहा 98% लोग सिर्फ मर्द हैं यहाँ, 2% जो औरतें होंगी, इक्की दुक्की उसमें से शायद कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर होगी, ज़्यादातर अपने भाई या अब्बा के साथ होगी। और फिर आप बाहर जाते हैं जो वेलकम एरिया होता है, वहाँ भी सारे मर्द, आप रोड पे जाते हैं
सारे मर्द, ठीक है, इक्की दुक्की लाइक अगर 10 लोग होंगे बाहर, उनमें से शायद 2 या 1 औरतें होंगी. And then I started questioning this, and this came from traveling. And फिर मैंने कहा these women जो were commenting on my photo, they were absolutely right. किधर हैं औरतें, कहाँ हैं, क्यों नहीं हैं? And इससे काफी लोगों को गुस्सा भी चढ़ा है, but I mean it's a conversation. ये बात करना आसान नहीं होता. Absolutely. Okay, so इसी से लेके my next question is again I do photojournalism as well. Yes. And उसके अंदर जो the most important thing is honor, privacy, consent, 100%, especially when you're 100%. telling stories and especially क्योंकि आपका पिछला question was about women. Yes. So how do you manage all that? Like आपने story भी बतानी है, आपने consent भी रखना है, and you don't have to वो नहीं कि जी आंसू निकलेगा तो story बिकेगी. नहीं, 100% मेरे लिए consent बहुत important है. और अगर जो बच्चे भी आ रहे हैं, जो नए फोटोग्राफी के अंदर सारे आ रहे हैं एवरीथिंग, एंड जब भी whenever I go to give lectures at universities and everything या टॉक देता हूँ, मैं पहली चीज़ यही स्ट्रेस करता हूँ कि यार कई दफ़ा you might find like oh my god this is a great story, this will get me clicks, likes, इससे follows, shares, reshares सब होंगे and everything, आपने सारी चीज़ें आप सोच, मगर आपने are you going to do this ethically or not? That is your first question जो होना चाहिए. एंड मेरा जो फर्स्ट चीज़ होती है स्पेसिफिकली वैसे हर स्टोरी में, अगर स्पेसिफिकली अगर वुमेन स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर और कॉन्टेक्स्ट समझे इस मुल्क का, हर चीज़, वी आर अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री, वी आर अ वेरी पैट्रियार्कल सोसाइटी. सो आपको अगर एक खातून की आप फोटो या स्टोरी लेके आप इंटरनेट पे डाल रहे हैं, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू हर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ ऑन यू इफ समथिंग हैपन टू हर. सो मेरे साथ ये होता है जो कंसेंट अगर कोई भी खवातीन के साथ होता है ना, कोई स्टोरी कर रहा होता हूँ, वो कंसेंट बड़ी मल्टी लेयर्ड हो जाती है इन द सेंस कि पहली वो उनसे बात करता हूँ, पूरी चीज़ उनको समझाता हूँ A to Z, क्या नजरिया, किस तरह मैं कर रहा हूँ एवरीथिंग. कई दफ़ा होते हैं खवातीन येस बोल देती हैं, ठीक है, बट कंसेंट रिवोक भी हो सकती है क्योंकि उसका भाई या अब्बा ने कुछ बोल दिया एंड मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ. साफ सी बात है, उसकी सेफ्टी है ना, उसकी सेफ्टी, उसको घर वापस वहीं जाना है, ठीक है. तो अच्छा, फिर कई दफ़ा ये होता है कि वो कंसेंट दे देती है, मैं कहती है अच्छा नहीं बिलाल, आई एम हैप्पी एंड एवरीथिंग बट यू विल हैव टू टॉक टू माय फादर. मैं कई दफ़ा मैंने लोगों की, उनकी खवातीन के अब्बाओं से मैंने आधे घंटे बात करी, फिर अब्बाओं ने कंसेंट दे दी. कई दफ़ा फिर होता है अब्बा कहते हैं अच्छा नहीं मगर आपको मेरे बेटे से भी बात करनी होगी. तो बेसिकली कंसेंट बड़ी मल्टी लेयर्ड चलती है. तो मैं कोई जो स्टोरी, कई दफ़ा होता है लोगों को आपको तो नजर आता है फाइनल प्रोडक्ट कि मैंने डाली है वो स्टोरी, यू डोंट नो व्हाट गोज इनटू इट बिहाइंड. कई दफ़ा मैं 1 महीने तक बात कर रहा होता हूँ एक सब्जेक्ट से टिल द स्टोरी एक्चुअली हैपेंस, एंड दैट इज द प्रोसेस. कई दफ़ा ये बड़ी क्रिटिसिज्म भी आती है, इज लाइक ओ बिलाल your work is good and everything and thank you very much but I wish you told more female stories. सच बात बताऊं, I wish also, मैं भी चाहता हूं कि I'd like to tell them but people need to understand it's not that easy to get into those spaces, those intimate spaces, और बड़ा टाइम लगता है to get there. So yeah. अब like you were talking about कि it takes you a month, yes, or maybe more getting one story. So what's your creative process, like not just story gathering story but overall creative process? Do you like have notes, do you have scripts? Yes, creative process is basically I always go in with an open mind, ठीक है. because कई दफ़ा I think some content creators and I mean हर बंदे का अपना process होता है. कुछ होते हैं जो when they go in उनके पास एक preconceived story होती है, ये. With me it's like when I'm creating content as in which is not paid content, because paid content obviously उसके अंदर तो different होता है. आपका वो तो script बनी हुई होती है, then you have to collaborate with the brand and everything, you have to go through that. But मेरा अपना जो creative process होता है, I go with a blank slate. मेरे पास कुछ दिमाग में नहीं होता है. मैं जाता हूँ वहाँ और सब्जेक्ट से जब मिलता हूँ एंड सब्जेक्ट से मैं बातें करता हूँ एंड एवरीथिंग, एंड सब्जेक्ट मुझे सारे जो डिटेल देते हैं एंड एवरीथिंग, उससे फिर I just take notes. Like phone का, by the way, phone के आप अपने notes use करा करें. Some people are pen and paper also, which is great also, but pen and paper is not that fast. So मैं like notes में लिखता रहता हूँ और मैं उनको बता देता हूँ, and ये भी बड़ा important part है, because you don't want to offend your subject. मैं उनसे कहता हूँ आप mind मत करिएगा, मैं आपकी हर बात सुन रहा हूँ मगर मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ, ताकि उनको ये लगे नहीं कि मैं text कर रहा हूँ. So that's very important. तो वो कहते हैं हाँ सही है. तो मैं उनकी हर बात सुन रहा होता है, जो मुझे important लगता है मैं notes बनाता हूँ. अब ये जो मैंने मलीदा पूरा बना देता हूँ ना नोट से, फिर मैं घर जाता हूँ, आराम से अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ कमरे का, एंड आई सिट ऑन माई चेयर. यू सीन दैट चेयर, एक वो जो मेरी रीडिंग चेयर है, yes. और मैं वहाँ क्वाइटली एक चाय का कप बना के, और फिर मैं द इंटायर थिंग हाउ आई विल पुट इट कुड कम इन 10 minutes और इट कुड टेक मी मल्टीपल डेज और मंथ्स, और वो नहीं आएगा. एक तो आपने जिस तरह बता दिया कि यू आर लाइक पेड कंटेंट है, कोलैबोरेशन है, सारा कुछ है, उसमें स्क्रिप्ट होती है, बट you have your own stories, your own subjects,
जिनको आपने बताना है, Yeah. तो how do you pick those? Like वो आपको सड़क पे मिलते हैं? Is it a research or you have like some? Areesh, it's actually very random each time. Each time it's like because of now, like alhamdulillah, since the page has grown, so a lot of people reach out. Yeah, lot of people मुझे कुछ वो देते हैं, लिंक देते हैं कि यार बिलाल, this is an interesting thing which you should be interested in. अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा ईवा बी जो सिंगर है, ठीक है. So Eva B went viral from my page, ठीक है. So yes, the छत वाली तस्वीर. Yeah, the छत वाली picture, ठीक है. And then mashallah now she's on Coke Studio and doing great things and everything. And like I don't want to take credit for any of this and shit because like Eva B is brilliant herself. But point being, talent is her. The talent is her. She's all there, ठीक है. But the thing is, how that story happened was basically एक कोई बंदा, एक मेरा दोस्त है लियारी के अंदर, उन्होंने बस मुझे मैसेज किया, he's like Bilal, there's this interesting personality here. वो लाइक वो फुल नकाब वकाब में थी, वी डोंट नो हर रियल नेम एनीथिंग, और वो रैप करती है बड़ा अच्छा, लाइक यू शुड कवर हर, ठीक है. मैंने कहा अच्छा, जस्ट गेट मी इन टच विद हर एंड एवरीथिंग, एंड इवन गेटिंग इन टच विद हर, वही फुल कंसेंट वाला सारा सीन एंड एवरीथिंग. एंड देन व्हेन टिल द पॉइंट आई मेट हर एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, okay, now I have my story over you here. have that gold mine, and but I was like, now I know what my story will be. Till I didn't go, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या मुझे बता रहा है, ठीक है. So it's like आपको समझ आता है when you get there and when you meet that subject, you're like, okay, now I think ये क्या है. So ये होता है, या कई people just इस तरह मुझे lead करते रहते हैं. जैसे अभी recently था एक बच्चा, उसका नाम यूसुफ है. They're Syrian refugees that escaped the Syrian war, कराची में रह रहे हैं, और वो शहर में बनाते हैं. So like इसमें इस केस में the person reached out himself, ठीक है. And कई like लोग हजारों तादाद में like मैसेज करते हैं, आप मेरी ब्राउनी खा ले, मेरा पिज्जा खा ले. But like like I was like, I'd love to, but अगर मुझे एक का खाऊंगा, मुझे हजारों के सबके खाने पड़ेंगे. But this kid, इसने अपनी स्टोरी मुझे ऑलरेडी बता दी थी, and I was like, you know what, I think I can use this on my platform and give this a greater reach to this. Yeah, because that's not just food, it's like migration and it's a story, it's an entire story and everything. And I was like, I would be more than happy. And then उस केस में I did reply back. And yes, I check all my DMs, I read all of them. Like लोग कहते नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता सारे हूँ, but like अपनी मर्जी से करता वो, like obviously you cannot reply to all of them, ठीक है. And some of them are really weird, तो आप क्या बोलो, ठीक है. उनको कुछ ऐसे DM भी आते हैं, कहते हैं मैं क्या बोलूँ, ठीक है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं स्कर्दू गया था, तो स्कर्दू में जो मेरा गाइड था, this was like, I only put 3 stories out from there. And वो एक स्टोरी ये थी, जो मेरा गाइड था, उसने ऐसी बातों में बताया. उसने कहा कि हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा आपकी हॉबी क्या करते हैं, और मैंने तो अपनी कहानी पूरी बता दी थी. He's like, मुझे जो है ना, मैं स्पेयर टाइम में जो गाने का बहुत शौक है. मैंने कहा है, and I was like, this is not something that people in Pakistan admit openly, because कि ओ मुझे गाने का शौक है, because you have to be comfortable with the person, और फिर उन्होंने कहा it takes time, and फिर आपकी judgment भी आ जाती है, you know. I think that's the most important part of getting the story. तो उसने कहा, मैंने कहा you really sing? He's like हाँ. And मैंने कहा कुछ सुनाना चाहोगे मुझे? उसने पहले मुझे हाँ बाएं शाएं कर दिया. मैंने कहा सही है, ठीक है. मैंने कहा I'm not going to press him. फिर एक दिन हम वापसी पे हम बस जा रहे थे कहीं से, तो उसने ऐसी रैंडम बस गाड़ी रोक दी. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया है, बहुत लंबा ड्राइव हो गई है. एंड वो गाड़ी से उतर गया. एंड मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है. उसने कहा नहीं आए ना आप इधर. मैंने कहा क्या हुआ? एंड he's like यहाँ मैं गाना गाऊंगा. उन्होंने प्रोडक्शन हमने हेड में प्लान कर ली थी. तो उसने कहा था पीछे जो है ना वो दरिया है और पीछे माउंटेन अच्छा है, ये फ्रेम है, you film, ठीक है. मतलब he was everything, you were just the guy to record it. I was just there to record it. He knew what he was doing. Yeah. Oh my god, and then he just started singing. Oi. So then that was one story which I got from there. So like, point being, it just happens. Like कई दफा होता है, like I have no content, कई दिनों फिर एकदम से बस एक स्टोरी आ जाती है आपके दिमाग में. You're like, let's do this. What's your role model right now? Or generally inspirations, role model, content, your Instagram page, your personality, क्या drive कर रही है as in role model or inspirations? यार सच बात बताऊं, I like लोग कहते हैं like which content creator do you look up to, या आपको कौन role model? I frankly speaking don't have any, because I don't know, because I think मेरा content is very unique in that way. And it's also evolving constantly, so I don't have anyone to see कि अच्छा ये benchmark था, or this is someone who I can like, and this is not me being full of myself, I just didn't know anyone who was similar to me जिससे मैं कहूँ कि अच्छा you know what, इस तरह करना चाहिए and everything. But I guess like if I do use as motivation, I just look at my journey from where I came.
and then where I am here, and I just like want to just get bigger inshallah. हमने फूड पे भी बात करी हाँ. थोड़ी बहुत, हमने स्टोरी टेलिंग पे बहुत अच्छे से बात करी, because that is something which is yeah your It thing is and my thing. I'm more interested about. Yeah. So my next question, I'm now coming to traveling. Yes. Do you have a number of the countries you have visited अभी तक? अभी जो है my number is in the mid 20s. Okay. So that I have 20 odd countries. 24, 25-ish. That is my number right now. Wow. So yeah, abhi maybe hopefully do 3-4 more before the year ends. Let's see, inshallah. So again, this was my next question. What's your next country? My next Any list, any bucket list? No. Next country, there are a few in my list. Maybe somewhere in the Middle East. Yeah, maybe back to Central Asia. I just came back from there. So yeah, that is on the. मैंने अभी like Africa नहीं किया. I've done Morocco, but like Africa by I mean Kenya, Tanzania. So that is on my list and everything. So ये वाला सिलसिला है. मगर अभी हमें खबरें मिली हैं कि हमारे कुछ दोस्तों की शादियां हो रही है back to back. तो शायद those trips might have to go on the back burner. Might have to come back to Lahore or Islamabad. So yeah, that is the other travel of thoda. Another update. Another kind of travel. We just discussed this before. So I was like, wait. So okay, I might have to be traveling domestically अभी फिलहाल. Generally in life when you're traveling or कहीं पे भी. No. ये moment आता है. I can't take this anymore. I can't handle this. Oh yeah, Areesh, it happens a lot, ठीक है? Because कई दफा like again, like I'm very thankful and alhamdulillah Allah ने बहुत इज्जत दी. I'm very thankful for that. But yes, कभी कभार in content and it has happened this year where I was like, sorry for my language, but I was like, oh my god, like आपकी बस हो जाती है, बिल्कुल बस हो जाती है. I'll tell you, जैसे इस साल was like specifically I think रमज़ान का टाइम था. And Ramzan was basically there was back-to-back campaigns, back-to-back collaborations with other creators, and literally I feel like एक point आया था where I did not recognize myself. Like मुझे पता ही नहीं था Mystapaki कौन है और ये मैंने पेज क्यों बनाया है. It just became it kind of became toxic in the sense कि and आप दूसरे creators को भी देख रहे हो where like वो लोग भी हर रोज डाल रहे हैं, so you feel compelled कि एक रेस में मुझे रहना है, which just made it really shitty and I did not want that. And so then after that Ramzan, like I think मैंने like एक हफ्ता 10 दिन I took off and I was like मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं कोई कैंपेन भी नहीं ले रहा. I don't want to post, ठीक है. And now this is what I often do. मैं बहुत ये करता हूँ in the sense कि अब जब मैं whenever I'm traveling या मैं ट्रिप पे जाता हूँ, one thing if you notice, I never post from there. मैं कभी वहाँ से कोई लाइव कोई तस्वीरें, आपको कोई अपडेट कुछ भी नहीं होगी. वो मैं घर पहुँच के आराम से उसको क्यूरेट करके अपनी मर्जी से करूँगा. Because when you're traveling, you want to switch off. You want to enjoy that place. You need that break away from all of this constant stimulation. So अब तो मैं बहुत करता हूँ. अब तो ये होता है, कई दफ़ा होता है, अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट कर लिया, okay fine. Taking some time off. एक सीक्रेट आपने आउट कर दिया कि जो आपकी ट्रैवल पोस्ट है वो लाइव नहीं है. No, never live. But that is also for security. Two things: security. One, because I need to like there's a lot of crazy people out there in the world, ठीक है. So I need to stay secure also. So मैं live नहीं करता. घर जाके usually करता हूँ. अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कराची नहीं हूँ, ठीक है. So like don't ask me, are you in Karachi? Yes, I'm in Karachi, ठीक है. If I'm posting from there. And दूसरा सीन होता है just to switch off also. I want to enjoy the place. मैं बस तस्वीरें ले लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रख देता हूँ. I don't want the pressure of oh my god कितने लाइक है, oh engagement है, oh लोगों को रिप्लाई करना है. Okay, so traveling में, travel vlogging में, what's the biggest challenge you face? Traveling में या travel vlogging के अंदर, like not just random traveling, vlogging में or generally documenting your travel. Biggest challenge that I face, I haven't had any challenges, alhamdulillah. I guess traveling itself में जो challenge आता है, just Pakistani passport is the biggest challenge. ठीक है. Getting to those places is always the challenge. ठीक है. वो मसला होता है. The one challenge is that I also tend to travel solo a lot. ठीक है. So that is also a challenge in itself. Because you are responsible for yourself. आपको अपनी ही full responsibility लेनी है. आपके साथ कोई है नहीं. And solo भी मैं इसलिए travel करता हूँ because sorry man, I'm going to say this, I'm going to get a lot of hate for this, but traveling with Pakistani people can be very difficult. ठीक है. Especially people, like what I mean to say is people जो आप किसी एमी random पाकिस्तानी के साथ नहीं travel कर सकते.
बिकॉज पाकिस्तान में जो है ना हमारे लोग बड़ी एक्सट्रीम वेवलेंथ्स पे हैं बहुत सारे एंड कंफर्ट जोन लाइक वो अपने क्राउड में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, बट यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल ओवर देयर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे मिडिल ग्राउंड मॉडरेट ट्रैवलर्स टाइप होंगे, जैसे अगर होगा अगर हलाल क्राउड होगा वो बहुत ही हलाल होगा, जो लाइक हराम होगा वो बहुत ही हराम होगा, ठीक है। सो लाइक आपको जो है ना मिडिल ग्राउंड ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है। So like recently even like when I traveled abhi, so like I was with a group of people who did not want to try the local food. उनको अगर आप किसी कंट्री में गए, अच्छा लोकल फूड हलाल था, भाई नहीं ट्राई करना था, बिल्कुल नहीं ट्राई करना था। I do travel with a group of people, but only if I've like vetted them, just like we've traveled before, साथ में, and our friend, but it's because we've known each other for years, and हम लोग सब लोग की wavelength match होती है and everything, so you're like okay cool, इनके साथ कर सकते हैं travel, but yeah, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि आप randomly you just met someone and like आपकी दोस्ती हुई, bro मैं भी जा रहा हूँ, हाँ bro मैं भी तुम्हारे साथ, नहीं, don't do that. Don't do that. Straight up, don't do that. Don't do that. Don't do that. Okay. Like you will regret it. So traveling में what's the one place or destination जो आपकी like exceeded your expectations and everything? Oh, exceeded my expectation. I think अभी जॉर्डन गया था, जॉर्डन अच्छा like international domestic करते हैं से, तो international के अंदर जो that really exceeded my expectation was Jordan. मैंने I didn't expect कि oh my god I'd be blown away इतना कि that it was like a fantastic trip. मैंने बड़ा इंजॉय किया था ट्रिप वो। दूसरा साथ में अभी काज़ाख्स्तान से वापस आया था, मेरे कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं काज़ाख्स्तान से, वो भी बड़ा अच्छा ट्रिप था। अच्छा, और डोमेस्टिक के अंदर which has like really exceeded my expectation and I wish more people go there is actually I really loved गवादर, मुझे गवादर बहुत पसंद आया था। and I think पाकिस्तान में like the mountains are beautiful and snow and yeah everything बहुत खूबसूरत है, but I feel like हमारे beaches बहुत खूबसूरत हैं also, and southern Pakistan deserves to be explored also. So yeah, food. हाँ, फूड में क्या? I mean, in all these destinations आपको internationally, locally कहाँ का food सबसे अच्छा लगा? Oh, अच्छा. Other than Karachi. No, we're not talking about Karachi. Yeah. तो मुझे because हम travel की बात हाँ travel की बात करें, अब मुझे अच्छा जो international मुझे खाना जो सबसे अच्छा लगा actually Balkans का, जहाँ ये बॉस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो ये सारे आते हैं, वहाँ का बारबेक्यू बहुत पसंद है। लाइक आई लव मीट और मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो वहाँ का बारबेक्यू बहुत मज़ेदार था, ठीक है। अनदर थिंग, वहाँ डिज़र्ट्स भी बड़े मज़े के होते हैं, और हम लाइक और किस्म की चीज़ें लाइक टर्किश कुछ उनका टच है, बट उन्होंने अपना टच दे दिया, तो लाइक इट वाज रियली गुड। सो आई लव दिस रीजन। लोकल में कराची नहीं है तो या नहीं, सच बात बताऊं, मुझे आई ड्रीम अबाउट काबुली पुलाव फ्रॉम पेशावर, लाइक बहुत मजे का काबुली पुलाव होता है, तो मुझे पेशावर का बहुत पसंद है। वहाँ पेशावर मर्दान वाले एरिया के चपली कबाब, सो या दैट केपीके एरिया फूड। Okay, good. One historical figure you would like to travel with? Anthony Bourdain. I mean, if he's historical, but काफी I like if someone was my, like I say, my idol, like मैं उसके गाइड्स बहुत शौक से देखता था, and I was like यार ये बंदा सही से वो जब जाता था ना, ट्रैवल करता था किसी जगह के अंदर, वो वहाँ जाके घुल मिल जाता था, and that's exactly how I like to travel. मेरा ये नहीं होता कि वहाँ पहुँच जाऊँ and everything ठीक तस्वीरें लेके, नहीं, मुझे वहाँ लोगों से बैठना है, उनके साथ गप्पे मारनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है। Yeah, so like Anthony Bourdain, I'd love to travel with Anthony Bourdain. And पता नहीं मुझे लिफ्ट देता कि नहीं देता, मगर मैं जरूर उसके साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमने करना है, उसने करना है, ये करना, that's हाँ, वो उसकी प्रॉब्लम, वो नहीं, हमने करना है। Okay, so I mean, हम पाकिस्तान का हमारा unusual सा love hate relation है। Agreed? बिल्कुल है। Okay, so what's the one thing that you won't change about Pakistan? That I won't change about Pakistan? Never. यार is the hospitality, and hospitality बताओ, and like it's hard for me to explain, but it's kind of like, जैसे तुम्हें भी पता है, हम पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि किसी भी शहर आप चले जाओ ना, आपको कोई ना कोई वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, and that person will come meet you, and कुछ ना कुछ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है। जरूर कई दफ़ा ऐसा होता है मैंने उस बंदे से जिंदगी में भी कभी भी नहीं मिला हूँगा, ठीक है, मगर just because I am this guest over there, तो या कई दफ़ा ये होता है, if I'm even traveling to little places, villages outside of the periphery and everything, it's this thing, this hospitality, this warmth that we have, that I would not like to change. आपके दोस्त के कज़न का दोस्त किसी शहर में होगा, he will treat you. Yeah, of course, and जैसे लाहौर के अंदर मैं हूँ, लाहौर के अंदर कई दफ़ा होगा, आपको भी पता है कि which is great, which I love about Lahore culture.
and people say no, this is very Punjabi culture. I was like, I'm not sure about that. मैंने कहा लाहौर तो 100% है कि इन द सेंस आपका दोस्त अगर मसरूफ भी होगा ना, वो कहीं से अपने भाई को आपके पास भेज देगा, आपके साथ चिल कर लेगा. लाइक लिटरली दिस हैज हैपेंड वंस कि लाइक मैं अपने दोस्त था, उसके भाई के साथ चिल कर रहा था, फिर भाई मुझे अपने दोस्तों के साथ ले गया चिल कराने. मुझे अभी तक अपना दोस्त मिला नहीं था, ठीक है. फिर मैंने भाई के दोस्तों के साथ चिल किया था. फिर शाम में मैं और उसके भाई के दोस्त हम फ्रेंड्स हो गए थे, और हमने दोनों भाई और मेरे दोस्त को कटा दिया था, और हम आपस में चिल कर रहे थे. I was like, this is some parallel universe thing. It's very easy हमारे कल्चर में to meet people. नए लोग आपको मिलना बड़ा आसान है, like जो कई कल्चर्स में आसान नहीं है कि आप नए दोस्त बनाना. I think यहाँ पाकिस्तान में नए दोस्त बनाना बहुत आसान है. Okay, so you post mixed stories, Yeah. Especially आपकी जो 14 अगस्त टाइप इस तरह Oh, की जो yes. होती हैं. What's your actual take? Are you still positive? It's hard to be positive in this climate. I mean, आपको economic, political, social situation तो सबको पता है क्या है इस मुल्क के अंदर. But साफ सी बात है, even as a content creator, like that's what I want to tell people. Although I post about Pakistan, even sometimes I also go through low moments, man. And I think my page, more than anything, it's not like कि लोग कहते हैं ना, आप positive चीज़ दिखाओ, आप positive चीज़ दिखाओ, या कभी कभार मुझे होता है नहीं आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो. माई थिंग इज जस्ट कि मुझे बस दिखाना है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ब्लैक और वाइट, ठीक है. इट्स नॉट गुड बैड, इट्स नॉट हैप्पी सैड, इट्स ग्रे है. एंड आई जस्ट वांट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू इट. दैट्स व्हाट आई जस्ट ट्राई टू डू. एंड आई ट्राई कि जो मूड ऑफ द नेशन जो भी है ना, लाइक जो पल्स है, जो लोग के डीपेस्ट थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, ट्राई टू पुट दैट आउट. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इट. सो लाइक एम आई पॉजिटिव राइट नाउ? Not really यार, सच बात बताऊँ, I'm not. But I am positive because यार मुझे जो youth है ना, I have faith in them. मेरा काम है यार to try to put content out इस तरह that I allow the younger people to critically think. इस पाकिस्तान में we are not allowed to critically think. हमें बोला जाता है कि बस ये अच्छा है बुरा है, इसके दायरे से इससे बाहर से ना सोचो. So I hope people in the future can think for themselves and then decide. So हमने कह दिया कि what you won't change. Yeah. Next question is, what do you want to change? And the trick part is one. I know my answer to this. So look, I tweeted this once, and it was quite a viral tweet. I was like, the best thing about Pakistan is its people, and the worst thing about Pakistan is its people. Like, and that is what I stand by that. So I said the best thing is our hospitality and everything, but worst thing is also हमारे लोगों से ये is how intrusive and judgmental our people are. How हमारे लोग without even knowing you, आपको जाने बगैर वो बस superficially आपको जज कर लेंगे, और आपके ऊपर पूरा आपको किसी डब्बे में यहाँ वहाँ डाल देंगे बगैर आपसे बात करे हुए. बट हमारे लोगों में ये बहुत बुरी बात इन द सेंस ये है कि we gossip a lot, ठीक है. and that is one thing which I wish Pakistanis should put their energy somewhere else. I think इससे जो मैं एक चीज टेक आउट कर रहा हूँ ये है कि पर्सनल स्पेस बिल्कुल भी नहीं है. एंड इट्स लाइक आपकी जिंदगी में हम होते हैं हमेशा, वेयर दे वांट टू नो एवरीथिंग. जैसे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ अपनी, ठीक है. इट्स लाइक द क्वेश्चंस दैट आई गेट इज लाइक कि अच्छा आप डॉक्टर हैं, आप किधर डॉक्टर हैं, आप कौन कौन सा प्रैक्टिस करें, आपने इम्तिहान कौन कौन से दिए हैं, आपने ये वाला दिया, आपने वो वाला, अमेरिका क्यों नहीं दिया, आप पाकिस्तान में क्यों रहते हैं, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ा आपने, अच्छा आप बाहर जाते हैं, आप बाहर आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं. ये लाइक दिस इज द ऑडेसिटी टू इट. हु पेज फॉर योर ट्रिप्स? समवन वंस ट्वीटेड, आई वांट टू नो हाउ रिच मिस्टर पाकी इज, हु फंड्स हिज ट्रिप्स, ठीक है. Like this is the level to which people go to. It's like अच्छा नहीं, and दूसरी बात फिर it's like, oh you got fit, do you take steroids? And the thing is we are so intrusive in other people's lives कि it's like enough is never enough for Pakistanis. Enough is never enough. Tell me कि what do you want to achieve from your career? What are like end goals? साफ सी बात है Areesh, I don't know what my end goals are, because you know this, I know this. This is a very new field. It's a very new evolving field. Content is like you don't know where this will lead to, what this will lead to, but I can tell you that it has given me so many opportunities, alhamdulillah. And the places it has taken me to, like alhamdulillah, is which I would never have even dreamt of at my age at least, ठीक है. कि यार मैं यहाँ तक जाऊँगा, मैं इतने मुल्क देख पाऊँगा and everything. ये कोई मेडिसिन की तनख्वाह has not taken me. This is not medicine, ठीक है. अगर लोगों को लगता है कि हाँ डॉक्टरों को बहुत पे मिलती है, डॉक्टर को कचरा मिलता है इस मुल्क में, and I will say this on the record. But and that is what it has given. Alhamdulillah, has given me so much respect. Alhamdulillah, I've worked with
people who I never thought ये मेरा नाम भी जानते होंगे. Exactly. So yeah, like I just hope कि let's see where this. I am excited to see like okay where I'll go next from here. Okay, now we are at the airport. Oh yeah. तो कैसा टाइम गुजर गया. इसकी क्या फीलिंग होती है आपकी when you are at Lahore airport? मतलब कराची एयरपोर्ट पे या लाहौर एयरपोर्ट पे लीविंग द सिटी? I mean it's always bittersweet. Like it's like कि मुझे हमेशा होता है कि अभी आज किसी ने पूछा था कि यार आप लाहौर आप कितना ऑफन आते. मैंने कहा आता बहुत ऑफन हूँ, मगर इट्स ऑलवेज लाइक अ टच एंड गो विजिट. like I feel like मैंने पूरी दुनिया में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट बनाया, मगर लाहौर के अंदर मैंने कभी आराम से बैठ के कंटेंट नहीं बनाया है. इट्स लाइक लाहौर हमेशा एक होता है, एक पासिंग विजिट होता है मेरा कि so like I really want to come to Lahore and just like chill here, like आराम से 4-5 दिन बैठूं and just get to know the city, which I still have not done abhi tak. It's just so I think I'm waiting for that to happen. I'm waiting for it to happen So? also. Inshallah बस as soon as आपने कहा ना, बस जब weather अच्छा होता है एकदम से एक विंडो जब गर्मी खत्म होने के बाद और स्मॉग शुरू होने से पहले बस वो विंडो है. So yes, that's तो the window we're looking forward to, and thank you so much. Thank you for It having has been me. amazing. Thank you so much for having me. Different experience, but मजा आया. I know यार, it's great. It's ना? great. And it's great like friends doing this. Yes. Like, so different take हमारा हो गया. चलो, चलो. thank you. Thank you so much.